Good afternoon and welcome back to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Bulls failed to capitalize on a steady start and so bears are back in the game once again. The Nifty, after opening on a firm note above the 18,000 mark, ended below the 17,900 mark. So big struggle there. Clearly bears are in command on Dalal Street at this point in time. Now on the charts too, the Nifty is now showing bearish indicators, clearly on the basis of moving averages as well as technical indicators, all giving a bearish note at this point in time. Well, FMCG, IT, PSU banks were among the stocks which did well, whereas metal, auto, private sector banks were under pressure. This despite better than expected numbers from HDFC Bank. The India Volatility Index rose by about 4% to 15, and among the big gainers in the Nifty we had Tech Mahindra, Wipro, HCL Tech. In fact, almost all tech stocks were in the limelight today. Good follow-up buying seen in all these stocks after decent set of numbers from all the major companies in the sector that have come out with the numbers so far. And among the prominent losers we had Adani Enterprises, Axis Bank, JSW Steel and NTPC Hindalco being under pressure. So, Santo, बहुत ही बोरिंग सेशन हो रहे हैं आजकल बिकॉज आज सुबह गैप अप हुआ, वहाँ मार्केट टिक नहीं पाया और जो 50-60 पॉइंट की जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट मार्केट में थी 17,900 एज यू मेंशन. इफ़ यू लुक एट द मार्केट्स आईटी से और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन ना एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स के बाद कोई बड़ा रिएक्शन आया. रिलायंस इंडस्ट्रीज सबडूड बैठा है. इंडेक्स के हेवी वेट्स में कोई बड़ा मोमेंटम वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं. सेंटो, आपको लगता है क्या ये जो चाइना ओपनिंग अप में ईटीएफ फ्लो वहाँ शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा बहुत ईटीएफ सेलिंग इंडिया में उस वजह से है, बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लो और वेटेज एग्जिस्ट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे इमर्जिंग मार्केट्स का? Well, I think Yatin, couple of factors here. One is clearly the China factor as you have mentioned, because valuations there, according if you go by most foreign brokerage reports, they are saying that Chinese shares are looking quite attractive after years of underperformance. Correct. And also the fact that the economy is set to open. But the other factor again, which is I would think byproduct of the first thing, is that FIIs have been steady sellers consistently, and I think that is making traders a bit worry. Domestic institutions, although continue to be on the buy side, clearly they are unable to take the market higher because you are not seeing the same kind of support coming in from foreign funds. In fact, if you look at Chinese stocks, the likes of Alibaba, they have gone up 50-100% in a very short span, which probably explains के जो ETF flows हैं वो काफ़ी एक्सेलरेट हो गए हैं चाइनीज़ मार्केट्स में. शुरू करें आज का स्टॉक का सिलसिला. आप बताइए आपका पहला स्टॉक कौन सा है? Well, I would open with L&T Finance Holdings. Good set of numbers there, and the stock was also among the prominent gainers today. In the future segment, we are also seeing build-up of long positions in L&T Finance Holdings. Now, this has been one NBFC stock which has been an underperformer for a very long time. And Yatin, despite the strong third quarter numbers, at this point, I think the street still is divided on the prospects, whether this is indeed a turning point or just a falls down. Goldman Sachs, for one, is bullish on L&T Finance Holdings. It has a buy rating on the stock with a price target of 108 rupees. Goldman Sachs has said that has praised the earnings performance and said that it's been a strong show across all segments, and the strength in the third quarter numbers clearly shows that the company is on the way to improving its profits. But Morgan Stanley has a slightly more cautious view. It's pretty neutral on the stock at this point, and it has said that the company is showing good strength as far as the retail loans go. The pre-provision operating profits on the retail side were pretty strong, but if you look at the wholesale loans, you are seeing a lot of repayments and prepayments happening there, which has led to the slight decline in the wholesale part of the business. So Morgan Stanley is neutral on the stock, but for now, given that the stock is also under-owned, Yatin, probably we are seeing some kind of even small purchases lifting the stock significantly. And interestingly, the stock has managed to outperform on a day on a generally lackluster session today. Absolutely, and if you look at the net interest margins also for L&T, वहाँ भी नतीजे काफ़ी अच्छा हैं. चलिए L&T से मूव होके L&T फाइनेंस रादर से मूव होके बात करते हैं आज के टॉप गेनर की. आईटी पैक में से वो है टेक महिंद्रा. और टेक महिंद्रा की बात करें तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एनालिस्ट नोट्स आज के सत्र में देखने को मिले.
टेक महिंद्रा डिविडेंड पे आउट 95% है, जो कि सबसे हाईएस्ट है आईटी कंपनीज में। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो 10 ईयर एवरेज के आसपास वैल्यूएशन आके रुका हुआ है FY24 बेसिस पे। और ब्रोकरेजेस को लगता है कि सीपी गुरनानी के बाद जो सक्सेसर आएगा, जो नए सीईओ आएंगे, उसका अनाउंसमेंट भी कंपनी बहुत जल्द कर सकती है। इनफैक्ट इनकी फरवरी मार्च अगले कुछ महीनों में इनकी एनालिस्ट मीट भी है। तो शायद बाजार में तथ्य ये है कि शायद एक नया सीईओ के अपॉइंटमेंट की यहाँ बातें हो जाएं। ऑब्वियसली सीपी गुरनानी से जब CNBC TV 18 ने बात की तो उन्होंने कहा कि सीईओ डेजिग्नेट बहुत जल्द नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली कोई प्रकार का अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी का एक बड़ा पोर्शन 5G केपेक्स को लेके आपको आ सकता है, क्योंकि 5G और टेलीकॉम सेगमेंट में कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये 5G का केपेक्स ग्लोबली शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी शुरू है, लेकिन जो स्टीम पकड़ेगा तो शायद टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा। सैंटो, Well, Yatin, one point is that Tech Mahindra has been clearly a laggard among in the IT. 40% नीचे है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक है। Exactly, and so I would be a little cautious this one-day jump. Also, let's not forget the fact that overall the sentiment for IT stocks in general was quite bullish. So we'll have to give it still some more time and see before this kind of an upswing in the stock can be sustained. Well, and the next stock on my watch list this afternoon is ICICI Bank. Good run up in the stock between July and November, and since then once again the stock has been faltering. It's been a clear laggard for the last almost a month now. Yet in partly this could also have to do with the fact that we are seeing news reports about the company's loan to the now bankrupt Lanco Group, on which it had advanced close to about $850 million. Now the interesting part is that this is an old loan. The company had written it off as an NPA in 2018 and also made provisions for it according to a Moneycontrol report. But at the same time, that is something that seems to be weighing on the market at this point in time, given that the stock has seen a good run up. Because if you see in the first quarter and second quarter, if you look at the earnings performance, they've been very strong. In fact, market has been talking about ICICI Bank now narrowing the gap with HDFC Bank, or in fact having now become the new market leader among private sector banks. Right. But again, over the last 1 month, we are seeing some kind of a shift once again to HDFC Bank over ICICI Bank. Absolutely, you know that shift is happening, but सैंटो, मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 2 साल 3 साल ICICI बैंक के री रेटिंग के बहुत बड़े हो गए। शायद अब स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज द वे अब मार्केट बिलीव करता है कि PSU बैंक्स में वैल्यू है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर हम देखें तो बहुत कंसिस्टेंटली PSU बैंक्स का इंप्रूव हो सकता है। प्लस HDFC बैंक HDFC का मर्जर हो जाएगा तो MSCI का वेटेज वहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो FI पार्टिसिपेशन वहाँ बढ़ सकता है। एक्सिस बैंक में काफ़ी लोग बुलिश है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस है। स्टॉक में एक बड़ा रनअप हो चुका है, यहाँ से रिटर्न कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या ट्रिगर्स आएंगे, वैल्यूएशन यहाँ से और रिच हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑलवेज वो HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक का एक जो वैल्यूएशन गैप है या जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो सामने आती है। तो जैसे सेंटो कह रहे थे, शायद यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म में चीज़ें वे हो रही हैं, लेकिन यहाँ से रूम कितना है ICICI बैंक को री रेट फर्दर होने के लिए, कितने लीवर्स हैं वो देखने बहुत ज़रूरी है। And given that the weakness is coming just ahead of the third quarter earnings, one also wonders if the market is expecting some kind of a disappointment on that front also. Well, your stock. So my last stock is PVR, top FNO loser today, more than 4% down. यहाँ कोटक का एक डाउनग्रेड नोट आया, इन्होंने टारगेट काट के 1850 रुपये कर दिया, लगभग 16% यानी 16% से देयर हैज बीन अ टारगेट प्राइस कट फॉर PVR, बिकॉज 3-4 चीज़ें हैं डेटा के साथ मैं आपको देता हूँ कि जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है कंज्यूमर सेंटीमेंट की वजह से। जैसे आपको पता चलता है कि मूवी का रिव्यू अच्छा नहीं है, तुरंत आप ब्रेक लगाते हैं, आपको मूवी देखना पसंद नहीं आता सिनेमा घरों में। ऑब्वियसली OTT से तो कंपटीशन है ही, लेकिन अगर हम 2019 का डेटा देख लें, जो 17-18 फिल्म्स ने 100 करोड़ और मोर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, वो फिगर केवल 7 का रहेगा 2022 में। तो जो कोविड के पहले ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज देखने को मिलती थी और अब 2022 कैलेंडर ईयर में जो हिसाब से बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस म्यूटेड रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऑक्यूपेंसी पे और आगे जाने वाले कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ इशारा करते हैं।
तो एक टफ टाइम रह सकता है सिनेमा घरों के लिए, अपने कंज्यूमर्स को फिर से सिनेमा घरों में लाना। पिक्चर्स की लॉन्चेस भी इतनी कोई खास हुई नहीं है, बॉलीवुड की सक्सेस रेशो इतना मिला नहीं है। ऑब्वियसली सीजनल फैक्टर भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें बनी नहीं है खास, तो इसको लेके शायद कोटक ने आज पीवीआर को डाउनग्रेड किया और डाउनग्रेड के बाद स्टॉक में एक ज़बरदस्त मंदी का माहौल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। Well, Yatin, very interesting to see how quickly sentiment changes, because not long back PVR was touted as one of the best plays on the reopen theme, and for a while it did seem that way. Right. Because there was concerns also that the OTT culture is now eating into attendance at multiplexes. Right. This was dispelled when the stock price was rising, but now when the stock price is once again under pressure after some disappointing box office releases, I think again the market is moving back into the mode where they say that probably it's OTT at work. But the thing about PVR, Yatin, is that a couple of flops, sentiment nosedives, and a couple of hits, suddenly sentiment revives very dramatically. It's very hard to play these kind of stocks, and more so considering that they never follow the conventional P metrics. Yes. If you were to value a stock on that, it would be hard pressed to justify the current valuations. Absolutely, and I don't know if the consumers are really hurt paying 300 to 500 rupees for a popcorn. That also could be a sentiment. I think the bigger the grouse seems to be that more than the tickets, it's always the money that they end up spending on F&B. On F&B that seems to be the sore point. Well, Absolutely. On that note, it's a wrap on this episode of Closing Bell. Thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. And we'll be back with you once again at 9 a.m. tomorrow morning. In the meantime, for all news, views, analysis, stay logged on to moneycontrol.com.